सो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आई एम JC जोरा फ्रॉम दिस चैनल, हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स इन नवोदय विद्यालयस। आज फिर आपके साथ जुड़े हैं इस सेशन में। बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। वी विल टेक हार्ड क्वेश्चंस और चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो हायर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो बने रहें, समझें इस टेक्निक को, हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। If you are new to the channel, then join it for the complete journey of mathematics. So let us find some of the techniques in two-dimensional geometry. Two dimension means what? When any surface area having only length and breadth, no height, then such type of figures are called two dimensions, like a triangle, a square, a rhombus. All are the examples of two dimension. अब इसी पर ही अपन आज चर्चा करेंगे और दो ऐसी प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हाउ टू गेट दिस टू डायमेंशनल्स हायर थिंकिंग क्वेश्चंस। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? आशा है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आई एम JC जोरा फ्रॉम दिस चैनल, हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन नवोदय विद्यालयस। तो आज अपन उसी पर चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कैसे आप इसको टू डायमेंशन ज्योमेट्री के जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस है उसको कैसे समझेंगे। अब इन्हीं में ही बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। यस, प्लीज़ कम टू दिस। और अब अपन शुरू करेंगे उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। सो लेट अस डिस्कस इट। Yes, see here, horse questions of coordinate geometry, two-dimensional coordinate geometry. So first of all, let us revise the important concepts based on this. इसके बेस पर जो important questions हैं उनको अपन या concept हैं जो यूज होने वाले हैं उनको पहले रिवाइज करेंगे। So let us take distance formula. If you are having any two points in two-dimensional space and having the coordinates, उनके coordinates x1 y1 और x2 y2 हैं, then what will be the distance formula? The distance between them will be obtained by this x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole and root. This is the distance formula. So one more formula is there, but very important, that is section formula. If 2 points are here, A and B are having x1 y1 and x2 y2, these are the coordinates, and this point is C in between them, and it divides in the ratio m ratio n. अगर m ratio n में इसको divide करता है इस line को, then the point C having the coordinates m x2 plus n x1, m x2 plus n x1 whole divided by m plus n. This will be the x coordinate, m y2 plus n y1 divided by m plus n. So this is called the section formula. So one more formula, if you are having the coordinates of three points 1, 2 and 3,
So there are 3 points, and you want to get the area of this triangle joining these 3 points. How to get it? See, 1 by 2 x1, अगर x1 y1 x2 y2 और x2 x3 y3, these are the 3 points, then you will use this 1 by 2 x1 multiplied y2 minus y3. याद रखने का तरीका, अगर यहाँ x1 है तो 2 और 3, 2 है तो 3 और 1, एक साइक्लिक ऑर्डर में चलिए, 3 है तो 1 और 2, अंदर आपका y कोऑर्डिनेट आएगा, बाहर आपका x कोऑर्डिनेट आएगा. So this formula will be applied in case of any triangle having all 3 coordinates of 3 points and get the area. ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं. हायर क्लासेस में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मेथड से भी अपन इसको कर सकते हैं. सो दिस इज द वे. नाउ सी, सो नाउ चैलेंजिंग क्वेश्चन में अपन एक क्वेश्चन लेके चलेंगे. See here, dear friends, try to understand the point. P is a point on the line joining A 2 3, B 8 9. दो पॉइंट हैं, so I will take this point is A having coordinates 2 3, right, and another point B having the coordinates 8 9. Okay, it divides P divides this. This is any point on the line AB joining of 2 points in the ratio 2:1. ये क्या करता है? P पॉइंट इसको AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है. ओके, सी, divides it into 2:1. Q is the image of, Q is another point, that is the image of P. ये पॉइंट आपका यहाँ पर, you will take this point is Q. Q is the image of P with respect to x-axis. You know x-axis, suppose this is x-axis and this is y-axis, and here you will take here, so here you will take this point is Q. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इमेज के केस में इक्वल हो जाएगा. ओके, Q is a image of P with respect to x-axis, then find the area of triangle APQ. A, P and Q. ये ट्राइंगल का एरिया आपको निकाला. You want to get this area of this triangle. Okay, let us see. First of all, to get the area of this, we should have the coordinates of all 3 points. Okay, see. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए. हाउ टू गेट दिस पॉइंट P? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बिकॉज इट डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1. 2:1 में डिवाइड करता है. देन हाउ टू गेट? सी, पहले अपन P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. 2 × 8, ये पॉइंट निकाला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट सेक्शन फार्मूला. 2 × 8, 2 × 8, 1 × 2 plus 1 × 2 divided by 2 plus 1. This will be the x coordinate. Similarly, y coordinate के लिए 2 × 9, 2 × 9 plus 1 × 3 whole divided by 2 plus 1. So what is it? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं डियर फ्रेंड्स. 16 plus 2 18, 18 divided by 3, this will be I think 6. Okay, this is 9 to 18, 18 and plus 3 21, 21 divided by 3, 21 divided by 3, what is it? 7, 6 7. So this P point is 6 7. So dear friends, can you find the point coordinates of this point P? P के मिल गए तो Q का, because Q is just the image of P through x-axis. x-axis में क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट इस लाइन में x कोऑर्डिनेट विल बी सेम, बट y का जो साइन है वो अपर साइड की जगह पर लोअर साइड में जाने से नेगेटिव आ जाएगा. सो इफ दिस पॉइंट इज 6 7,
then definitely this point will be 6 comma minus 7, because the y coordinate will be minus here. Okay, see here, this will be 6 comma minus 7. ये 6 7 हो गया, ये 6 comma minus 7. I have cleared this point that on the x-axis this point is above the x-axis, this is lower than x-axis, that's why this point will be, y coordinate will be negative this side. So all 3 points we obtain. So with the help of this formula we can get the area of this triangle APNQ. So area 1 by 2 x1 multiplied y2 minus y3 plus x2 multiplied y3 minus y1 plus x3 multiplied y1 minus y2. We will apply this formula. ये अप्लाई करिए, एंड 1 by 2 ए पी एंड क्यू, इन तीनों पॉइंट्स को लगाएंगे. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3. सो पुट हियर 2 as it is. We will take 2 y2 minus y3. y2 is 7 minus this, so it is 7 plus 7. You can take this plus x2. x2 means what? 6 multiplied y3 is minus 7 minus y1 is minus 3, minus 7 minus 3, you are getting this, plus x3, what is that? 6, again 6 multiplied y1 minus y2. y1 is 3 and y2 is 7. You're getting this. So finally you can calculate it very easily. 14 2s are 28 minus 10 plus of 60 and 3 minus 7 minus 4, 6 ja minus of 24. So dear friends, what we are getting here, so finally what is the this is 60, 28 minus 24, that is 4 here, 4 plus 60, that is 64 divided by 2, 64 divided by 2, that is 32 square unit. That will be the area of this triangle. अब देख लीजिए, कोई डाउट है तो you can write on the chat box. This was a very hard question, challenging questions on the base of 2-dimension geometry. Without wasting any time, I will take one more question. So second challenging question, if A, B and C, these 3 points you are given, then check whether triangle ABC से बना हुआ triangle is isosceles, क्या वो isosceles triangle है. Find the vertical angle point, उसका vertical angle point भी निकालें. First of all, our target is whether this ABC triangle is isosceles. Isosceles triangle, which triangle having 2 sides equal? Okay, so first of all I will take the distance AB distance निकालेंगे. Yes, AB distance को निकालिए. So how to get this one? Divyansh Kalalji, very good. So 0 0 पॉइंट आपने किसका निकाला है? प्लीज लेट मी क्लियर. यस, A point is this, B point is this, C point is this. We want to show that whether this triangle is isosceles or not. So first of all we have to take all the distances. अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड है तो तीनों डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेंगी. So with the help of this distance formula you can take, ये distance formula हमारा है, इससे अपन निकालेंगे. Okay, see here, AB, what is AB? That is x2 minus x1 whole square, 6 plus 2 whole square
then 0 minus 4 plus 0 minus 4 whole square on root. So what is it? 6 plus 2 8, 64, and this 16. 64 plus 16, it is 64 plus 16 you are getting. So finally 80, a root of 80 you are taking. Similarly, the distance BC, you get the distance BC. How to get this BC? Yes, BC. How to get this BC? B और C का distance निकालिए. So what is this? 2 minus 6 whole square plus 6 minus that is 8 minus 0 whole square on root. What is it? This is 2 minus 6 is 4, 4 square is 16, and plus 64. Again we are getting 16 plus 64. What is it? That is on root of 80. AB and BC, two sides are equal. तो ये तो पक्का प्रूव हो गया. It is isosceles triangle because the two distances are equal. अब अपन CA निकालेंगे. What is CA? Get the value of CA. C and A. So 2 plus 2 whole square plus 8 minus 4 whole square. 2 plus 2, 4 square, that is 16, and again 16. So 16 plus 16, you are getting on root 32. Yes. So we have proved that when these 3 points we have taken, this is A, B, and this point is C. AB and BC are equal. AB and BC, this side and this side both are equal. So that's why it is an isosceles triangle. No problem. So not equal to CA. So isosceles triangle is that that type of triangle where two sides are equal, only two sides. And in case of equilateral triangle, all three sides must be equal. That is the difference. So we are having the question with the isosceles triangle. That's why two sides are equal. हमारा ये टारगेट पूरा हो गया. Now see what is the vertical angle point? What will be the angle? Vertical angle point. अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, then this is called the vertical angle. So here this side and this side both are equal, AB and BC. B is common, so that's why this point will be the vertical angle. तो ये अपना vertical angle हो जाएगा. So dear friends, ये छोटा सा क्वेश्चन था. दो कॉन्सेप्ट इसमें चले. एक डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने लगाया, और अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास इसमें क्या क्या लगा. एक डिस्टेंस फार्मूला लगा, एक सेक्शन फार्मूला हमारा अप्लाई हुआ, और तीसरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, दैट इज़ फॉर द एरिया. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट सो ईजी. हायर थिंकिंग का क्वेश्चन था. दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एंड यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक. सो अगर आपने कुछ ये समझा है, देन try to understand this point. If you are new to the channel, then join it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ. सो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.